सभी उपस्थितियों को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। आज हम सब इस सुबह योग दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम इसका प्रारंभ एक प्रार्थना पूर्वक तरीके से करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैद्यकेन यो आपाकरोत तं परवरम मुनीनां पतांजलिं प्रांजलिः रानतोस्मिन्। इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। जिस महामुनि ने योग के द्वारा अंतःकरण का मल हटाया, व्याकरण के द्वारा अपनी वाणी को शुद्ध किया और वैदिक शास्त्र के द्वारा शरीर को शुद्ध किया, ऐसे पतंजलि महामुनि को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग का प्रदर्शन के प्रणेते पतंजलि महामुनि को प्रणाम करते हुए उनका आदर पूर्वक स्मरण करते हैं। यद्यपि हमें सामान्यतः पतंजलि केवल योग शास्त्र के संदर्भ में ही ज्ञात है, तथापि उनका व्याकरण और आरोग्य इन दोनों विषयों में भी अच्छा खासा योगदान रहा है। दुनिया में स्वस्थ रहने के लिए लोगों ने अनेक प्रकार की उपचार विधियां तथा साधनों का अन्वेषण किया है, किंतु योग यह उपचार ऐसी पद्धति है अथवा जीवन पद्धति है कि सारी उपचार प्रणालियों से भी बढ़कर है। यह हम सब जानते हैं। बिना किसी साधन के, बिना किसी दवाई के, आत्मसंयम के द्वारा यानी यम नियमों के यथार्थ उसका पालन करने से ही ऐसा स्वस्थ रहा जा सकता है। हमें यह योग सिखलाता है। इस विचार को लगभग 5 वर्ष पूर्व अपने प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनो में अच्छी तरह से प्रतिपादित किया, जिसके फलस्वरूप यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। देखिए, उत्तरायण और दक्षिणायन ऐसी सूर्य की 2 गतियां मानी जाती है। उत्तरायण के अवधि में सूर्य की ऊर्जा अपने यहाँ अधिक बरसती है और 21 जून से ही यह उत्तरायण प्रतिवर्ष आरंभ होता है। इसी दिन को दिनमान धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर सूर्य नमस्कार दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। सूर्य से अपने अच्छे आरोग्य की प्रार्थना की जाती है। चलो, इसी उपलक्ष्य में सबसे पहले हम सब अलग अलग योगासन जान लेंगे। Padmasana. Padmasana or lotus position is a cross-leg sitting asana originating in meditative practices of ancient India, in which the feet are placed on the opposing thighs. It is an established asana commonly used for meditation. The asana is said to resemble a lotus to encourage breathing properly through associated meditative practices and to foster physical stability. Lotus pose or Padmasana is an extremely powerful pose, especially for women. Here is a visual representation of Padmasana. Benefits of Padmasana. It opens up the hips, stretches the ankles and knees, calms the brain, increases awareness and attentiveness, keeps the spine straight, helps develop good posture, eases menstrual discomfort, helps keeping the joints and ligaments flexible, stimulates the spine, pelvis, abdomen and bladder. Vajrasana. Vajrasana is also known as thunderbolt pose or a diamond pose. It is a kneeling asana in Hatha Yoga and modern yoga as exercise. The name comes from the Sanskrit word Vajra, a weapon whose name means thunderbolt or diamond, and Asan meaning posture or seat. Vajrasana is one of the easiest yoga asanas to perform. Here is a visual representation of Vajrasana. Benefits of Vajrasana. Vajrasana helps better blood circulation in the body. It modifies the blood flow by reducing the blood flow in lower portion, especially in the legs, and increasing blood flow to the digestive organs, resulting into efficiency of the digestive system. Vajrasana is the answer to constipation, stomach disorder,
digestive problems, and acidity. It makes lower body flexible, tones body muscles, hips, thighs, and calves, cures joint pains, urinary problems, etc. Losing weight becomes possible with regular practice of Vajrasan. Vajrasan calms mind and relaxes the nerves. Slow and rhythmic breathing in this position can induce a meditative state. Pavana Muktasan. Pavana Muktasan or wind relieving pose is an asana in modern yoga. The name comes from the Sanskrit word pavan meaning wind, mukta meaning free, and asan meaning posture or seat. The pose is unknown in medieval Hatha Yoga appearing in the 20th century. Have a look at the visual representation of Pavana Muktasan. Benefits of Pavana Muktasan. Pavana Muktasan helps to strengthen the abdominal muscles. Pavana Muktasan cures constipation, indigestion, diarrhea, and acidity. It also effectively massages the intestines as well as stimulates the internal organs of the digestive system, thus releasing the trapped gases as well as improving digestion. The asana strengthens back muscles as well as tones muscles of legs and arms. The asana can also ease tension felt around the lower back area. Pavana Muktasan helps to improve the circulation of blood around the hip area. It helps to heal menstrual disorders. The asana can effectively loosen one's spinal vertebrae. Bhujangasana. The name comes from the Sanskrit word bhujanga, meaning snake or cobra, and asan, meaning posture or seat. Bhujangasana resembles a serpent with its hood raised. Cobra pose or Bhujangasana is part of the sequence of yoga postures in Padma Sadhana and Surya Namaskar or Sun Salutation. Here is a visual representation of Bhujangasana. Benefits of Bhujangasana are it opens up the shoulders and neck, tones the abdomen, strengthens the entire back and shoulders, improves flexibility of the upper and middle back, expands the chest, improves blood circulation, reduces fatigue and stress, useful for people with respiratory disorders such as asthma. Marjaryasana. Marjaryasana or Bidalasana, both meaning cat pose in Sanskrit. It is a kneeling asana in modern yoga as exercise. The name Bidalasana is from the Sanskrit Bidal, meaning cat, and Asan, meaning posture or seat. Here is a visual representation of Marjaryasana. Benefits of Marjaryasana. It brings flexibility to the spine, strengthens wrists and shoulders, massages the digestive organs and improves digestion, tones the abdomen, relaxes the mind, and improves blood circulation. Tadasana. Tadasana, also known as mountain pose, it is a standing asana in modern yoga as exercise. It is not described in the medieval Hatha Yoga texts. It is the basis for several other standing asanas. Tadasana is from the Sanskrit word tad, meaning mountain, and asan, meaning posture. Here is a visual representation of Tadasana. Benefits of Tadasana. It improves your posture. If you have the tendency to hunch or slouch, then practicing Tadasana can be of help. It may help you to increase height, boosts mental awareness, improves breathing, promotes weight loss. It boosts energy levels. It improves your mood, provides relief from sciatica. Vrukshasana. Vrukshasana or tree pose is a balancing asana. It is one of the very few standing poses in medieval Hatha Yoga and remains popular in modern yoga as exercise. The name comes from the Sanskrit word vruksha, meaning tree,
and asan meaning posture. This posture replicates the graceful, steady stance of a tree. Unlike most yoga poses, the tree pose requires keeping your eyes open in order to maintain body balance. Here is a visual representation of Vrukshasana. Benefits of Vrukshasana. This pose leaves you in a state of rejuvenation. It stretches the legs, back, arms and invigorate you. Improves balance and stability in the legs. On a metaphysical level, helps one to achieve balance in other aspects of life. Strengthens the ligaments and tendon of the feet. Strengthens and tones the entire standing leg up to the buttocks. Assists the body in establishing pelvic stability. Strengthen the bones of the hips and legs due to the weight bearing nature of the pose. इसके बाद आप सभी के सामने प्रणाली संकेत जोशी कुछ आसनों का प्रात्यक्षिक करके दिखाएंगी। Oh.
आशा करती हूँ कि आपको यह प्रात्यक्षिक ज़रूर अच्छा ही लगा होगा। दिन में सुबह या शाम के वक्त ज़रूर आप प्राणायाम, आसन, सूर्य नमस्कार ज़रूर किया करें और आपका जीवन सशक्त बनाएं। हाँ, एक ज़रूर ख्याल रखें, योगासन करने से पहले लगभग 1 घंटा आप खाली पेट रहें। अब हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह विश्व शांति की प्रार्थना करते हुए मैं आपसे अनुज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।